So in the last class, we were discussing about one general property like sine of sine inverse theta. Not only for sine, for every trigonometric function, sine of sine inverse, tan of tan inverse, that will be always theta. For example, sine of sine inverse 1 by 2. So that will be without any tension. You can say it is 30 degree. pi by 2 because देखो ना formula क्या है, sine of sine inverse 1 by 2 is 30 degree. So as you said, this become sine 30 degree, and sine 30 degree is 1 by 2, correct? 1/2. So there is no need to do like the directly. You can say whenever sine inverse theta, it is always whatever that comes in place of that x, theta or x, whatever it is, instead of theta. If you use ex, sine inverse x, sine inverse x is equal to x always. Not only sine inverse, cos inverse x is equal to x. Tan Yes. inverse x, this is equal to, Tan inverse. not tan inverse, tan inverse x is x. Cosecant cosecant of cosecant inverse x, it is x. Secant of sec inverse x, it is x. Cotangent of cotangent inverse x, which is equal to x. उसका रीजन मैंने आपको बताया अभी था. Like this is your set domain, codomain. This is domain, this is codomain. So your function sine है तो whatever it is from this function, this is sine x. So sine inverse is from codomain to domain. So what restrictions is there? -1 to 1, and here minus pi by 2 to pi by 2. So your sine inverse x. So आपने इधर एक वैल्यू लिया से 1/2, -1 और 1 के बीच में. So उसका साइन इनवर्स किधर आएगा? उसका साइन इनवर्स किधर आएगा? पाई बाई 6, करेक्ट? 2 6. राइट. देन आप Yes, sir. उसका साइन, जब उसका साइन निकालेंगे, साइन जब आप उसका साइन, दिस इज साइन pi by 6, it will goes to 1/2, isn't it? Sine inverse, this you can see sine inverse 1/2. Sine inverse 1/2 matlab we have to find the angle between -90 and 90 such a way that sine of that angle is 1/2, that is pi by 6. So sine inverse 1/2 is pi by 6. Clear? Then so sine inverse 1/2 मिल गया. Yes, sir. Then उसके बाद उसका साइन, so pi by 6 का साइन, so वापस that will go to 1/2. That is why sine inverse x, which is equal to x. Cos inverse x, it is x. Tan inverse x, it is x itself. Cosecant, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं. Cosecant inverse x, sec inverse x. Cotangent inverse x is equal to x. Without any doubt, you can say that. Now I asked you a question. Is this true for the reverse way? Just sine inverse of sin x. What is the value? Is it equal to my? It was my question. Is it equal to x? I was asking a question. Is it equal to x? Do you have any answer? I have told you to think about it. आपने think सोचा है क्या? So what about sine inverse? That means inverse comes outside the bracket. Sine inverse of sin x. So for example, sine inverse of sine pi by 3. Okay. So
ये फॉर्मूला करेक्ट है तो हमें पाई बाय 3 आना चाहिए. माय क्वेश्चन इज इट पाई बाय 3 ऑलवेज? दैट इज अ क्वेश्चन. So this is sine inverse. What is sine pi by 3? What is sine pi by 3? बोलो. Sine inverse. What is sine pi by 3? Pi by 3 मतलब 60. Sine 60. Are you there? √3/2. हाँ, root Yes, 3 sir. by 2. Root 3 by 2. Now, which is equals sine inverse root 3 by 2. So that means you have to find the angle between negative 90 and 90 such a way that sine of that angle is root 3 by 2. So sine of which angle is root 3 by 2? 60. That means pi by 3. Yes, sir. So here आपको sin inverse sin pi by 3 क्या मिला? pi by 3 मिला. Means sin inverse sin x आपको x मिला. But my question is it always like this? आपने कभी सोचा है क्या? Otherwise I don't need to waste time. I don't need to want to waste time. देखो another example देखो. Sin inverse sin uh, pi 7 pi by 6. Okay. Sin inverse sin 7 pi by 6. तो फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलना चाहिए? 7 पाई बाई 6 ही आना चाहिए. सही है तो Yes, sir. हाँ, देखो Yes, आते sir. हैं क्या नहीं. साइन इनवर्स देन साइन पाई बाई 6 साइन 7 पाई बाई 6. 7 पाई बाई 6 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? इट इज इन द थर्ड क्वाड्रेंट. रेफरेंस एंगल आएगा पाई बाई 6. रेफरेंस एंगल आएगा पाई बाई 6. करेक्ट. बिकॉज पाई Yes, sir. Yes. प्लस Yeah. पाई बाई 6 इज 7 पाई by 6. By 7 pi by 6. So reference angle pi by 6 आएगा. So उसका मतलब sin 7 pi by 6 is same as sin pi by 6. But only thing is sin may vary. In third quadrant, sin is negative, so it should be negative sin pi by 6. Right? Yes, sir. So, yes, sir. so you can say negative. What is sin pi by 6? 30 degree. That is what is sin 30 degree? 1 by 2. 1/2. It is negative 1 by 2. So इधर ब्रैकेट के अंदर sin 7 pi by 6 आएगा negative 1 by 2. Now sin inverse of minus x formula is that it is minus of sin inverse x, isn't it? That's a formula. Negative, they say sin inverse of minus x property I have told you. You can take minus outside. It is sin inverse x. So which is equals minus sin inverse 1 by 2. Sin inverse 1 by 2 मतलब you have to find the angle between minus 90 degree to 90 degree such that whose sine is 1 by 2. Sine of which it is all we are considering always positive thing, na? So it will come in the first quadrant. Sine of which angle is pi by 2? 1 by 2 it is 30. 30. So that means pi by 6. So 5/6. answer came as minus pi by 6. देखो तो उसका मतलब क्या होगा? Sin inverse sin x is not always is equal to x. Did you understood that? Sin inverse sin x is not always equal to x. Is it clear? उतना तो समझ में आ गया.
क्योंकि इधर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3 था तब पाई बाई 3 मिला, बट साइन इनवर्स साइन 7 पाई बाई 6 था तब 7 पाई बाई 6 नहीं मिला, माइनस पाई बाई 6 मिला। उसका मतलब साइन इनवर्स साइन एक्स इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्स जब इनवर्स पहले आएगा। sir. Yeah. अदर केस नो प्रॉब्लम, साइन पहले आएगा, इनवर्स ब्रैकेट के अंदर आएगा, इट इज ऑलवेज एक्स, देयर इज नो डाउट इन दैट, दैट इज वन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। नाउ इनवर्स बाहर आएगा, साइन इनवर्स साइन एक्स, इट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू एक्स। सो आप बता सकते हैं क्या कब होगा एक्स और व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, दैट इज द। जब हाँ हाँ 5/6 180 से मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में जब थीटा आएगा तो थर्ड क्वार्टर में अभी मैंने एक एग्जांपल बताया था ना, फोर्थ क्वार्टर में भी हो सकते हैं, मैंने एग्जांपल बताया है वो। आप मुझे बता सकते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स एक्स होगा व्हेन? Minus pi by 2 equal to to pi. Yes, that means when x belongs to minus pi by 2 Minus pi by to pi by 2. That means when x is in the principal value branch. Okay. If this angle, if this, that is the main point. If this angle is in the principal value branch, then sine inverse sine x is equal to x itself. Sine inverse sine x is equal to x itself when, in other words, when x is in the principal, when x is, when x between is in the principal. PVB, principal value branch, when x is in the principal value branch. Okay. Okay, now my question is, so if when x is not belongs to principal value branch, what do you have to write? We have to write the corresponding angle in the principal value branch. We have to write the corresponding angle in principal value branch. You got it? देखो 7 pi by 6, 7 pi by 6 में you know that the value is minus 1 by 2, so sin 7 pi by 6 minus 1 by 2 आ रहा था, तो उसका corresponding था इधर साइन नेगेटिव आते था फोर्थ क्वार्टर में, दैट इज व्हाई वी गॉट इट नेगेटिव पाई बाई 6। ओके, सो ये नॉर्मल वे हम अभी अपने करस्पॉन्डिंग एंगल आप ऐसे करके प्रॉब्लम करके निकाल सकते हैं, यू कैन, इफ यू कैन डायरेक्टली यू कैन टेक नो इशू, अदरवाइज ऐसे प्रॉब्लम करके हम निकाल सकते हैं। सो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जब साइन इनवर्स और इनवर्स जब बाहर आएगा, दैट इज लाइक दिस, साइन इनवर्स sin x, it is equal to x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. 5/2. Similarly for other functions also, cos inverse cos x, ये हो जाएगा x when x belongs to 0 to pi. Tan inverse tan x, this will be x itself if x belongs to the principal value branch, minus pi by 2 to pi by 2. Got it? Cosecant Yes, sir. inverse, yeah, cosecant x, it will be x when x belongs to minus pi by 2 to pi by 2, also x not equal to 0. Similarly, sec inverse sec x, simple way बोलेंगे तो it is equal to x when it is in the principal value branch. Cotangent inverse cotangent x is equal to x
when x belongs to 0 to पाई। कुछ नहीं, मैंने सिर्फ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच लिखा। सो इतना आपको समझ में आना चाहिए कि जब इनवर्स बाहर आएगा साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स व्हेन एक्स इज इन द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अगर एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में नहीं है तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल हमें निकालना पड़ते हैं। ओके, क्लियर? यस सर। या सो विल डू सम क्वेश्चंस। देखिए एक एग्जांपल देखो, tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। हम डायरेक्ट जाके वी कैन नॉट से दिस इज 7 पाई बाय 6। ओके, क्योंकि प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है क्या नहीं चेक करना। सो देखो 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6 मतलब किधर आ रहे हैं? 6 पाई बाय 6 है तो पाई हो गया, पाई से ज़्यादा है ना। सो इट इज little more than pi, that means reference angle is pi by 6. So pi plus pi by 6 is 7 pi by 6। tan का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किधर है? नेगेटिव पाई बाई 2 pi by 2। So this angle not comes in the principal value branch, isn't it? यस सर, यस सर। So अभी आप देखो, आपको रेफरेंस एंगल मिल गया। सो अभी एक काम इसी है, रेफरेंस एंगल कितना है? पाई बाय 6 है। नाउ थर्ड क्वार्टर में tan क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। tan पॉजिटिव होगा। तो देन अभी आपको एंगल चाहिए -90 to 90। सो कौन सा क्वार्टर में, इन दोनों क्वार्टर में 1 और 4, इनमें से कौन सा क्वार्टर में पॉजिटिव आएगा? फर्स्ट क्वार्टर में। फर्स्ट। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर में रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 आना चाहिए। सो एंगल कितना है? पाई बाय 6 ही, isn't it? राइट, फर्स्ट क्वार्टर में रेफरेंस एंगल पाई बाय 6 आना चाहिए। सो इट इज पाई बाय 6 itself। Did you get that point? यस सर, करस्पॉन्डिंग एंगल। या करस्पॉन्ड उसका करस्पॉन्डिंग एंगल अगर फोर्थ क्वार्टर में है तो -5/6 आते था। अगर उसमें से आपको तकलीफ है तो आप ऐसे कर लेना, दिस इज tan इनवर्स tan 7 pi/6। सो tan pi 7 pi/6 and tan pi/6 आर इक्वल। ओके, अगर साइन चेक करना, थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव है, सो इट इज पॉजिटिव। सो यू कैन राइट दिस एज tan pi/6। And now pi/6 is the reference angle है, so tan inverse tan pi/6 is pi/6। Got it? So क्या होगा, ऑप्शंस आएगा, जैसे आपको ऑप्शंस में pi/6 होगा, 7 pi/6 होगा, some other values होगा। So correct answer is pi/6। Similarly tan inverse tan 9 pi/8। देखो 9 pi/8, 8 pi/8 है तो 1 होते था, पाई होते था। सो 9 pi/8 मतलब इससे थोड़ा ज़्यादा। सो कितना ज़्यादा? pi/8 ज़्यादा, बिकॉज पाई प्लस pi/8 है 9 pi/8। सो क्लियरली इट इज़ नॉट कमिंग इन द रेफरेंस साइड। सो tan 9 pi/8 and tan pi/8 both are same। third quadrant में tan positive, so it is positive only। so you can write this as tan inverse tan pi/8, so which is equal to, answer is pi/8। Got it? आया समझ में? यस सर। दूसरे साइन इनवर्स साइन 3 pi/5। सो सबसे पहले देखने कि 3 pi/5 किधर आते हैं। 3 pi/5, 3 pi/5
देखो 3 पाई/6 है तो कितना आता था, पाई/2, राइट। pi by 2. सो Yes, sir. उसका मतलब है पाई/2 से ज़्यादा है। ज्यादा है. सो पाई/2 से ज़्यादा है, सो इट इज समथिंग मे बी हियर, राइट, isn't it? दिस इज द एंगल। Yes, sir. तो रेफरेंस एंगल कितना होगा, रेफरेंस एंगल होगा पाई-3 पाई/5, राइट, Yes, विच इज sir. इक्वल टू 2 पाई/5। सो दैट मीन्स रेफरेंस एंगल होगा 2 पाई/5। सो हमें ये पता है कि साइन 3 पाई/5 एंड साइन 2 पाई/5 both are equal. Only thing is their Equal. sign may vary, मतलब प्लस होगा माइनस होगा। 3 पाई/5 lies in the second quadrant. Second quadrant means sign positive, so it is positive only. So you can write this as, this is same as sine inverse sine 2 pi/5. Now sine inverse sine 2 pi/5 is 2 pi/5 because it comes in the reference. Clear? Yes, sir. अगर आपको इसमें से रेडियन से तकलीफ हो रही है तो आप क्या कर लेना, यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू डिग्री, सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया। 3 pi/5, 3 pi/5, 3 pi/5 इंटू पाई/1, 180/पाई से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, पाई पाई कट होगा, 3 5 are 15, 36 आएगा। 108 डिग्री आएगा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, आपको अगर रेडियन मेजरमेंट तकलीफ हो रहे है तो। क्लियर? Yes, sir. देन ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि अनदर समटाइम्स क्वेश्चंस विल बी लाइक दिस, tan इनवर्स 2 sin 2 cos inverse √3/2, व्हाट इज द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। सो क्वेश्चन देख के डरने की कोई जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप करना। दिस इज tan इनवर्स 2 sin 2, अभी cos इनवर्स √3/2, cos inverse √3/2, so we have to find the angle between 0 and pi, right? Yes, sir. Whose cos is √3/2, cos which Sir, angle is √3/2? pi by 6. Pi/6, 30 degrees, so pi/6, so इधर आएगा 2 into pi/6, so which is equal to tan inverse 2 sin 2 into pi/6 मतलब pi/3, Yes, that sir. is tan inverse 2 into sin pi/3, not inverse, sin pi/3, sin pi/3 मतलब 60 degree, 60 degree. so sin 60 degree Root 3. Root 3 by 2. √3/2. 2 to cancel. Okay, let me check, did I make any mistake or not. 2 cos inverse cos √3/2, cos adjacent side on cos 60. ए इधर मिस्टेक है ना, cos इनवर्स Cos √3 30 degree. 30 डिग्री है क्या, या cos 30 Yes, करेक्ट, sir. एक ओके 30 60 90 1 √3 2, so 2 sin 2 cos inverse √3/2, tan inverse 2 sin 2 cos inverse √3/2, cos inverse √3/2,
रूट 3/2 आएगा cos 30 डिग्री. So cos 30 डिग्री 5/6 बरोबर. पाई बाय 6. ओके, पाई बाय 6 ये. So 2 into pi by 6. So pi by 3. So 2 sine pi by 3. So sine 60 degree. Sine 60 degree is opposite side root 3/2. So tan inverse root 3. And tan inverse root 3 is Tan 60. opposite side. Pi So by 60. 3. Pi by 3.